Assalamualaikum, this is Umar Khan, your English language instructor, and today I'm back again with another amazing video. तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से एक सिंपल सेंटेंस से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर एक सिंपल लाइन से किस तरह से आप एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। बिकॉज आई नो आप सबका प्रॉब्लम ये है कि हाँ हमें इंग्लिश समझ आ जाती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, हम सिंपल सेंटेंस बोल लेते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलने की बारी आती है वी गेट अफ्रेड बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू. So today I'm telling you that how to create complex sentences from simpler sentences. तो हमारे पास यहाँ पर 10 levels हैं जिसके जरिए हम सीखेंगे किस तरह से एक सादा फिक्रे से हम मुश्किल से मुश्किल तरीन जुमले बना सकते हैं. Is to make your brain habitual of speaking more complex sentences. Okay, so in today's video my focus is to make you speak more complex sentences, and what you actually have to do is focus, listen, speak and repeat. Focus, listen, speak and repeat. So let's get straight into it. So the first level sentence that we have is a woman opens a savings account. So, a woman opens a savings account. तो यहाँ पर हमने बता दिया कि एक औरत जो है वो बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाती है. So, which means a female goes to the bank and opens a bank account. Okay, so repeat after me. A woman opens a savings account. A woman opens a savings account. So what you can do right now is या तो आप शेडो टेक्निक को फॉलो करें, आप मुझे सुने और इसको रिपीट करें. A woman opens a savings account. A woman opens a savings account. Okay? So this was the first step जिसमें हमने बताया एक औरत बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाती है, which means कि she wants to save some money. Okay? So the next step is for a vocation. So here it means किस लिए. Now we are telling the reason कि वो अकाउंट क्यों खुलवाती है. For a vacation, छुट्टियों के लिए. That means she want to do something in the vacation. Okay, a woman opens a savings account for a vacation. Again, a woman opens a savings account for a vacation. Okay, once more, a woman opens a savings account for a vacation. Okay, so we are done with 2 levels. Now move on to level 3. And plans to budget her money. And plans to budget her money. Okay, now she did 2 things. अब यहाँ पर हमने बताया first उसने बैंक अकाउंट क्यों खुलवाया. For a vacation, because she wanted to do something in the vacation. Okay, and plans to budget her money. और उसने and second thing that she did जो उसने किया वो ये था कि उसने अपना मनी, उसके जो पैसे थे उनका एक बजट बना लिया, एक फिक्स बजट बना लिया. ओके, शी हैज प्लान्ड अ बजट फॉर हर मनी. जो भी पैसे उसके पास है उसने उनके लिए एक प्लान बना लिया है कि मैं यहाँ यहाँ खर्च करूंगी. ओके, सो शी हैज प्लान्ड इट. नाउ लेट्स repeat these sentences. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money. Once more, a woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money. Okay, so let's move on to level 4. To save more each month. To save more each month. Okay, now here what we actually did
इज, हमने पहले बताया कि एक जो औरत है वो बैंक अकाउंट खुलवाती है, एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाती है। किस लिए खुलवाती है? वी टोल्ड देम द रीजन, फॉर अ वेकेशन, छुट्टियों के लिए। सो नाउ व्हाट वी एक्चुअली डिड इज, हमने बताया एक औरत बैंक अकाउंट खुलवाती है, दैट मीन्स अ सेविंग्स अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट खुलवाती है टू सेव सम मनी फॉर अ वेकेशन, छुट्टियों के लिए। एंड सेकेंड थिंग दैट शी डिड वाज एंड प्लान्स टू बजट हर मनी, और उसने प्लान कर लिया कि कहाँ कहाँ वो पैसे खर्च करेगी, टू सेव मोर ईच मंथ, ताकि वो हर महीने कुछ मजीद पैसे बचा सके। क्लियर? नाउ लेट्स रिपीट दीज सेंटेंसेस। A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month. Let's do it once again. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month. Once more, a woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month. Okay, now let's move to level 5. Now, level 5, what we are going to do is we are going to add while also saving for emergencies. While also savings for emergencies. अब यहाँ पर हमने बता दिया कि एक औरत थी, उसने बैंक अकाउंट खोला वेकेशंस के लिए, ठीक है, पैसे बचाए वेकेशंस के लिए, और मनी को उसने ये प्लान कर लिया कि वो अपने पैसे बजट के मुताबिक खर्च करेगी ताकि वो ज़्यादा पैसे बचा सके हर मंथ। वाइल, जबकि ऑल्सो सेविंग फॉर एमरजेंसीज, जबकि उसने ये भी किया कि वो एमरजेंसीज के लिए भी सेव करेगी। ओके, सो शी सेव्ड मनी फॉर वेकेशन, planned to budget her money, and along with this what she did was she saved some money for emergencies, कि कोई भी मुश्किल आ जाए तो तब के लिए भी उसने पैसे जो हैं वो emergency के लिए सेव कर लिए। So now let's read these sentences. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month, while also saving for emergencies. Again, a woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month, while also saving for emergencies. Once again, a woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month, while also saving for emergencies. Okay? Now next we are going to move to level 6, like car repairs, like car repairs. ओके, अब हमने यहाँ पर बता दिया कि जो इमरजेंसी जिनके लिए सेव कर रही है दैट इंक्लूड्स कार रिपेयर्स, वो कौन कौन सी इमरजेंसीज के लिए सेव कर रही है। वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ इमरजेंसीज कि किस तरह की इमरजेंसीज आ सकती हैं, जैसे कि कार रिपेयर, अगर गाड़ी खराब हो गई तो उसको रिपेयर करने की इमरजेंसी के लिए पैसे सेव किए। ओके, नाउ लेट्स रीड इट वंस अगेन। A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repairs. Okay? A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repairs. Okay? Once again, a woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repairs. Okay, we are going to 7. We have and medical issues. Okay, so now we have given 2 examples of emergencies. हमने कहा जैसे कि कार को रिपेयर करवाना पड़ जाता है या फिर कोई मेडिकल इशू आ सकता है तो okay, so she is saving money for car repair and medical issues as well. So now let's read it once again. A woman opens a savings account for a vacation
and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repair and medical issues. Once again, a woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repair and medical issues. Now what you actually have to do is या तो आप मुझे imitate कर सकते हैं, mimic कर सकते हैं, the shadow technique. Listen to me, repeat it louder again and again, okay, until we get it right, okay. So let's repeat it once again so that we complete the third time. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repair and medical issues. Okay. Next, she keeps a separate fund. She keeps a separate fund. Now we have told that she also keeps a separate fund. Okay. While we were talking about the emergencies, तो हम ये बताना चाह रहे हैं ये जो emergencies के लिए उसने पैसे बचाए हैं ना, that means she is keeping a separate fund. उसने कुछ पैसे साइड पर बचाकर रखे हैं. Okay. She keeps a separate fund. Okay. Now let's repeat it once again. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repair and medical issues. She keeps a separate fund. Okay, now she keeps a separate fund to ensure she is financially prepared. Okay, why is she saving a lot of money? She saved money for vacation, she planned her budget, and she also saved for emergencies. Why? So they are saying that she actually saved this separate fund, specifically this emergency. Okay? ये वाले जो पैसे हैं ये सेपरेट फंड जो है उसने जमा किया ताकि वो ये मेक श्योर इंश्योर मतलब ये यकीनी बना सके दैट शी इज फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड कि वो माली तौर पर तैयार हो. ओके ताकि वो माली तौर पर तैयार हो. Now let's repeat it one more time. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repair and medical issues. She keeps a separate fund to ensure she is financially prepared. Okay, before enjoying her vacation. Before enjoying her vacation. So by the end we are saying कि वो ये सब इसलिए करना चाहती है ताकि उसे पता हो कि मैं माली तौर पर तैयार हूँ और वो अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर सके. ओके अपनी वेकेशंस को एंजॉय करने से पहले वो ये मेक श्योर करना चाहती है कि वो यानी कि माली तौर पर फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है, माली तौर पर तैयार है. ओके नाउ लेट्स रिपीट इट one last time. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more को enjoy कर सके. Okay? अपनी vacations को enjoy करने से पहले वो ये make sure करना चाहती है कि वो यानी कि माली तौर पर financially prepared है, माली तौर पर तैयार है. Okay? Now let's repeat it one last time. A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month while also saving for emergencies like car repair and medical issues. She keeps a separate fund to ensure she is financially prepared before enjoying her vacation. Okay? Now, what you actually have to do is you have to do it over and over again. Okay? Until you get it right. Because जितना ज़्यादा आप इसको मिमिक करेंगे, शैडो टेक्निक को फॉलो करेंगे, I know I sometimes be very quick or fluent while reading it. What you actually have to do is pause the video or you can slow it down. If you want to, you can slow down the speed and after that listen to it clearly. Okay?
So this was the technique that you actually have to follow in order to speak simpler to more complex sentences. If I want to do one more thing here, what I want to do is remove all these points here. Now what we have is these are not the sentences now. This is a whole paragraph that you have created on your own. ओके व्हाट वी एक्चुअली डिड इज हमने एक जुमला बनाया, उसके बाद हम एडिशन करते गए, थोड़ा थोड़ा एडिशन करने के बाद वी हैव नॉट रिटन दीज 10 sentences, instead we have a paragraph. How? A woman opens a savings account for a vacation and plans to budget her money to save more each month, while also saving for emergencies like car repair and medical issues. She keeps a separate fund to ensure she is financially prepared before enjoying her vacation. So, we did it. How? By making sentences one by one. So, what you actually have to do is keep attaching, keep connecting the words, okay, in a right manner. See, whatever you're saying, be it anything, give reasoning like we did here. हमने बताया एक औरत ने एक सेविंग अकाउंट खोला, we gave them the reason. For a vacation, किस लिए खोला? We gave them the reason. Vacations के लिए खोला. Next we told them, और उसने प्लान किया कि वो अपने जो पैसे हैं उनका बजट के मुताबिक उनको खर्च करेगी. Why? The reason again to save more each month, ताकि वो मजीद जो पैसे हैं उनको बचा सके. Next we said उसने मजीद जो है पैसे बचाए, किस लिए बचाए? एमरजेंसीज के लिए. कैसी एमरजेंसीज? जैसे कि कार रिपेयर, जैसे कि मेडिकल इश्यूज. ओके नेक्स्ट वी टोल्ड देम कि उसने सेपरेट फंड, ये जो एमरजेंसी